अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पासिंग ऑफ रिस्क फ्रॉम सेलर टू द बायर, ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम सेलर टू द बायर। रेलेवेंट प्रोविजन इज सेक्शन 26 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेक्शन 26 जो एक जनरल रूल देता है दैट इज रिस्क प्राइमा फेशियाई पासेस विद द प्रॉपर्टी। जैसे ही प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू द बायर, ओनरशिप ऑफ द गुड्स जैसे ही ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू द बायर, right at that point, according to the general rule, risk of loss and damage also transfers from seller to the buyer. Section 26 also provides an exception and it says unless otherwise agreed by the parties, meaning thereby parties अगर चाहें तो अपने agreement के जरिए से general rule को exclude कर सकती हैं और they can decide a point different from the time of transfer of property for the transfer of risk. So ऐसी सूरत के बीच में ownership of the goods and risk of loss and damage will transfer separately according to the agreement between the parties. सेक्शन 26 जो है वो अपने प्रोवाइजोज के बीच में कुछ रूल्स देता है विद रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज फ्रॉम सेलर टू द बायर, और वो ये कहता है कि डिले इन डिलीवरी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अ पार्टी, रिस्क लाइज विद द पार्टी एट फॉल्ट। जहां पे गुड्स की जो डिलीवरी है दैट इज डिलेड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अ पार्टी, the risk of loss and damage will rest with that party to the extent that loss is a result of that delay. That is what is provided in section 26, its proviso, first proviso. इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक जो रिस्क ऑफ लॉस है दैट हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। हमने ये चीज़ कई दफ़ा पहले डिस्कस की है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है, ये तीनों इनका बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे ये तीनों दे हैव टू टेक प्लेस। दे कैन टेक प्लेस सेपरेटली एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। तो जहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज है वो सेलर से बायर को पहले से ट्रांसफ़र हो चुका है और जो सेलर है वो एक खास टाइम पे उन गुड्स को डिलीवर करने का पाबंद है, लेकिन वो अपनी किसी नेग्लिजेंस की वजह से या अपने किसी फॉल्ट की वजह से वो उन गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाता। तो ऐसी सूरत के बीच में जो ये प्रोवाइजो है वो ये कह रहा है कि रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज विच हैज already traveled from seller to the buyer will revert back. It will come back to the seller. Seller will once again become liable for the loss and damage to the goods. But to what extent? Only to the extent that loss and damage is a result of that delay. इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के गुड्स अगर पैरिशेबल नेचर की हैं और जो सेलर है उसने अपने पास गुड्स को रिटेन किया है और वो उनको एक खास टाइम पे डिलीवर करने का पाबंद था, लेकिन गुड्स को उस खास टाइम पे डिलीवर ना करने की वजह से द गुड्स हैव पेरिश्ड। तो अब ऐसी सूरत के बीच में ये जो लॉस है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ डिले ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, तो इसका जो लायबिलिटी है दैट विल कम ऑन द सेलर। उसके बरक्स अगर गुड्स जो हैं वो पैरिशेबल नेचर की नहीं है और बिल्कुल महफूज जगह के ऊपर वो पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी नेचुरल कैटास्ट्रॉफ की वजह से उनको कोई लॉस हो गया, तो अब ये जो लॉस है दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ डिले, तो इसका जो लॉस है दैट विल नॉट कम ऑन द सेलर, दैट विल बी बोर्न बाय द बायर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो कि पहले से उसको रिस्क ऑफ लॉस उसको पहले से ट्रांसफर हो चुका हुआ था। और ये जो सिचुएशन है इट अप्लाइज वाइस वर्सा, मीनिंग देयर बाय कि अगर एक खास टाइम पे जो सेलर है वो गुड्स को डिलीवर करने का पाबंद था, लेकिन बायर उस जब वो टाइम आया सेलर इज रेडी टू डिलीवर, लेकिन बायर जो है ही इज अनएबल टू रिसीव द डिलीवरी। अब अगर ये जो डिले है नो बिकॉज दिस डिले इज ऑन द पार्ट ऑफ द बायर और इसकी वजह से अब अगर गुड्स को नुकसान पहुंच गया है, अब इसका जो जिम्मेदार है वो बायर है, चाहे जो रिस्क ऑफ लॉस है वो अभी तक सेलर के पास मौजूद हो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, लेकिन क्योंकि अब ये जो रिस्क ऑफ लॉस है ये जो लॉस हुआ है ये बायर के डिले की वजह से हुआ ऑन द पार्ट ऑफ डिले ऑन द पार्ट ऑफ द बायर, उसकी वजह से हुआ है, तो इसलिए इसकी जो लायबिलिटी आएगी दैट विल कम ऑन द बायर।
उसके बाद जो सेकंड प्रोवाइजो है सेक्शन 26 का, वो कहता है with the property transfers before the risk and the possession is with the seller acts as bailey of the buyer. Likewise, where the risk transfers before the goods and the possession is already with the buyer acts as bailey of the seller. So, what is provided in the second proviso of section 26, that is that where the risk of loss and damage and the possession of the goods, it is divided between the parties. Risk of loss and damage is with one party, and possession of the goods is with another party. तो ऐसी सूरत के बीच में the party who is in possession of the goods will act as bailey of the other party. तो जो उसके ऊपर जो पार्टी इन पोजेशन है उसके ऊपर वो सारी की सारी लाइबिलिटीज जो है वो और सारे के सारे राइट्स वो दोनों उसको बिलोंग करेंगे, जो कि एक बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं एज प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Thank you very much. That was all about transfer of risk of loss and damage from seller to the buyer according to Sale of Goods Act 1930. If you have any questions, please feel free to ask into the comment box. Thank you very much.